Welcome back to the very third episode of this beautiful series of 2023 Finish Your Year Strong. And I hope that इस particular series से आप अपना maximum potential बाहर निकाल पा रहे हो और उसी के साथ जो चीजें मैं इस particular series में mention कर रहा हूँ which I've already mentioned in episode 1 and 2, आप उन सारी चीजों को अपनी life में inculcate कर रहे हो। आप उससे पूरी clarity ला पा रहे हो कि आपका current scenario क्या है and what are the things which you need to take forward for the next year and so on। और उसी के साथ इस पर्टिकुलर एपिसोड में वी आर गोना डिस्कस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज 7 hours टू फोकस अपॉन टू फिनिश दिस पर्टिकुलर ईयर स्ट्रॉन्ग। यानी कि इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम 7 ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर द 7 hours which are gonna help you in order to understand not just about your current tense, like not just about your present tense, not just about your future tense, but about your past as well। यानी कि आपको पास्ट में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको रिमूव करना है, क्या स्टेप से रिमूव करना है ताकि आप कंप्लीट प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट रहें and even you can focus upon your goals and visions and so on. So that's what we are going to discuss further into this particular series. And if you're someone who is new to our YouTube channel, make sure you subscribe to our YouTube channel and make sure you watch this particular video till the end as well. And if you're completely new to this particular video series, make sure you check out first and second part so that you can understand और आप उसी के साथ hands on भी हो सकें and you can understand कि ये series हमने start क्यों किया है, because my main purpose to share this particular content with you is to help you achieve success in terms of mind, body and soul. Because even this is what I've learned from my mentors, is that even this is analogy which Tony Robbins mentions about, is that success in any aspect of life is all about 80% psychology and 20% strategy. No matter अगर आप trading कर रहे हो, if even if you're doing your job, business, entrepreneurship, even if you're doing freelancing or any other profession as well, if your mindset is at its place, अगर आप अपने mindset से top notch level पे हो, then no matter what strategy you use, if you have faith on that particular strategy and if that strategy is like fail proof thing and all, then you only have to work upon your mindset. Because even I have realized this concept since last 2 years, is that uh, the you can consider, it's like काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर हम लोग बेस पे हैं, लेट्स अज्यूम दैट वी आर एट लेवल 0, तो हमें काफी सारा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। बट लेट्स अज्यूम दैट इफ वी वांट टू अचीव द लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड वी वांट टू गो बियॉन्ड दैट, लाइक वी वांट टू अचीव मास्टरी इनटू इट, तो काफी सारे लोगों को लगता है कि हमें हार्ड वर्क और भी ज्यादा करना होगा। बट द पॉइंट इज माय फ्रेंड, you have to do smart work in such a way that all the things, because even this is what I've observed is जैसे ही आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी में अपने आप को ऊपर ले जाते हो, इफ यू improve your, you can consider your capabilities and all, things start getting easier। बेस पे लगता है कि यार काफी सारी चीजें डिफिकल्ट है, काफी सारी चीजें हार्ड है, वी शुड गिव अप एंड ऑल। बट वंस यू स्टार्ट गोइंग स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड, तो आपको रियलाइज होगा कि चीजें और भी आसान होती जा रही है। एंड दैट्स जस्ट बिकॉज यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ इन सच अ वे that you are ready to accept all the changes and you are ready to accept all the challenges as well, right? So in this particular video we are going to discuss about what are the 7 hours to focus upon. First of all, that's going to be review। हमें अपनी हिस्ट्री को रिव्यू करना है। रिव्यू इन द सेंस वी जस्ट हैव टू रिव्यू आवर गोल्स, आवर ग्रैटिट्यूड जर्नल, हमारे लाइक वॉट एवर यू फिल आउट ऑन अ डे टू डे बेसिस, कि मैंने पिछले 1 साल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने डे टू डे बेसिस पे की है। दोज आर द एक्टिविटीज विच आई डिड ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस, ऑन अ डिसिप्लिन बेसिस। बट उसमें से काफी सारी चीजें ऐसी होगी, लाइक यू कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट इनटू लाइक अ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। एंड व्हाट यू हैव टू रिव्यू इन दैट इज कि जो भी मैंने चीजें करी है इन लास्ट 1 ईयर, इन लास्ट 11 मंथ्स, उनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प करा है इन ऑर्डर टू डेवलप माई सेल्फ, इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स माई गोल। तो उन सारी चीजों को एक साइड कलेक्ट करना है एंड द थिंग्स विच डेंट वर्क, you just have to remove those from your day to day activities। उसी के साथ you will get lot of time as well। So the first thing which is going to help you is to review। एंड यू कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट, जैसे कि मैंने मेंशन किया है, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, कि आपको पर्सनल लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं, लेट्स अज्यूम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपको मैक्सिमम रिजल्ट दिया है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपको रिजल्ट नहीं दिया है, एंड इट कुड ऑल्सो बी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज एज वेल। तो आप उसको थोड़ा सा, यू कैन कंसिडर, आप उसको धीरे धीरे करके, और यू कैन स्टार्ट रिमूविंग दोज एक्टिविटीज फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, ताकि आपकी लाइफ में और टाइम बच सके एंड देन यू कैन
start giving more time to the things which are actually giving you results in terms of personal life. And let's assume in terms of professional life, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, then in that particular work, like even you might have heard about this principle, like जब हम you can consider जो भी हम काम करते हैं, out of which जो 20% एक्टिविटीज होते हैं उससे हमें 80% आउटकम मिलता है, एंड 80% काम से हमें 20% आउटकम मिलता है. सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस 20% एक्टिविटीज जिससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है, जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा है. एंड इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल कि आप उसी 20% पे फोकस कर रहे हो, उसी को शार्पन कर रहे हो, एंड सो ऑन. राइट. सो फर्स्ट थिंग विच इज गोना हेल्प यू इज टू रिव्यू योर हिस्ट्री, रिव्यू योर पास्ट. सेकेंड कम्स टू रीफ्रेम. रीफ्रेम इन द सेंस, अभी आपने अपने थॉट को क्लियर कर दिया कि ऐसा है वैसा है, मुझे यहाँ से पॉजिटिव ये सब चीजें हैं जो कि मुझे कंटिन्यू रखनी है, ये सारी चीजें हैं जो मुझे रिमूव करनी है. बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू रिफ्रेम योर थॉट्स. बिकॉज जैसे कि मैंने ये चीज मेंशन करी, सक्सेस इन एनी एंडेवर और एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, दैट इज माइंडसेट, एंड 20% इज ऑल अबाउट सिस्टम्स एंड स्ट्रेटजीज एंड टूल्स एंड टैक्टिक्स. उसी के साथ आपको थॉट्स पे वर्कआउट करना है. नाउ फर्स्ट वी रिव्यूड आवर पास्ट, रिव्यूड आवर हिस्ट्री, एंड देन वी हैव टू रीफ्रेम आवर थॉट बेस्ड ऑन आवर एक्शंस. Right, so that's what you have to do. And please do make sure जैसे ही आप जैसे ही I'm opening up one by one, you have to note down all the things. You can take a clean sheet of paper ताकि आपको personal clarity मिलती रहे. And it's not just about learning all these concepts and all, it's about implementing it, because जब तक आप implement नहीं करोगे, it's not gonna make sense in it, and it's not gonna help you in order to achieve and even move forward into your life. Third comes to reset. यानी कि आपको फर्स्ट वी क्लियर्ड आउट, पहले हमें क्लैरिटी मिली कि अभी हमारे पास में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें मूव फॉरवर्ड करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें गिव अप कर देना है. उसके हिसाब से हमने हमारे थॉट्स को पॉजिटिव करा. एंड द थर्ड थिंग विच वी हैव टू डू इज टू रीसेट आवर विजन एंड गोल्स. काफी सारे लोग ऐसे करते हैं कि यार पिछले साल मैंने गोल सेट किए थे कि मुझे इतना इतना वेट गेन करना है, इतने लेट्स अज्यूम इतने मुझे पैसे कमाने हैं, इतना मुझे रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना है एंड ऑल. बट द फैक्ट इज माई फ्रेंड, जैसे ही आप खुद को डेवलप करते हो, जैसे ही यू गो थ्रू द जर्नी ऑफ सेल्फ एजुकेशन एंड सो ऑन, जब भी आप पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करते हो, this is also what I do, this is also what my mentors do, and this is also what everybody should do, is that we should reset our vision and goals based on our current situation. यानी कि let's assume कि एक साल पहले आपका विजन था कि मुझे इतने लोगों की हेल्प करनी है. let's assume you want to help 1,000 people. Now while that while going through that particular journey, आप में और इंस्पिरेशन आया होगा, आपको रिजल्ट्स मिले होंगे, आपको और इंस्पिरेशन मिला होगा कि हाँ, if I add on these things, तो मैं लोगों को और भी फास्टर रीच आउट कर सकता हूँ और मैं उनकी और भी मदद कर सकता हूँ. इन द सेम सेंस यू कैन इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर bandwidth and you can reach out to 10,000. right, so that's how we have to clarify our visions and goals. जिस तरीके से we can reset all the things ताकि हम next year जो है we can actually achieve not just 1x, not just 2x, but we can achieve 10x and beyond that as well. So the third practice is what you have to do is आपको अपने visions और goals को और भी strengthen करना है. You have to broaden them out ताकि आप अपनी life में even you can consider you can achieve the goals which are beyond that. And even this is one of the concept which I got from Elon Musk as well. He mentions that कि आप जो कुछ भी goal को achieve करना चाहते हो by 10 years down the line, you can just take that particular goal और उसको सीधा एक साल में रख दो कि अगर मुझे एक साल में इतने गोल्स को अचीव करना है, देन हाउ कैन आई अचीव दैट. इवन इफ लेट्स अज्यूम कि अगर आप वो पूरे गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट यू टुक 30%, 40%, 50% ऑफ इट. यानी कि आपने 3 साल, 4 साल और 5 साल के जो गोल्स आप अचीव कर पाते थे विद दैट 10 years bandwidth, आपने ऑलरेडी उसको एक साल में ही अचीव किया. एंड यू आर वे बियॉन्ड मच पर्सन, लाइक यू आर वे बियॉन्ड, you can consider, I can't give that percentage, but I can guarantee that आप लाइफ में काफी ज्यादा लोगों से और भी आगे पहुंच जाओगे in terms of achieving your goals, or you can consider your dreams, aspirations, and so on. So the third thing is to reset. Fourth is to redirect. Redirect in the sense we have to redirect towards our goals and so on. अब हमारे हमें अब हमें हमारे थॉट्स पे वर्कआउट करना है, अभी हमारे एक्शन प्लान पे वर्कआउट करना है. अब हमने पहले हिस्ट्री पे वर्कआउट किया, देन वी रिफ्रेम्ड आवर थॉट्स, देन वी रिसेटेड आवर विजन एंड गोल. अब उसके चलते हमें एक्शन को रीडायरेक्ट करना है. व्हाट लॉट ऑफ पीपल थिंक इज कि मेरे मेरे लिए पिछले साल ये सारी चीजें वर्कआउट करी है,
In the next year, all these same things are gonna work out. But the point is, my friend, let's assume, you can consider, let's assume this example in terms of finances. अगर आप लेवल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम जनरेट करनी है, so there are lot of activities, there are lot of opportunities which you can follow, which you can pursue, ताकि आप 10,000 रुपीज पर मंथ को अचीव कर सकते हो. Similarly, let's assume कि अगर आपको 1 लाख पर मंथ तक जाना है, तो आउट ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज देयर विल बी वेरी फ्यू जो कि आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ का माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम और ऊपर जाएं, यानी कि इफ वी वांट टू अचीव 10 lakhs पर मंथ, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज का जो नंबर है वो और भी कम हो जाएगा. Similarly, if we go for 1 crore, then opportunities will start getting reduced. काफी कम opportunities होंगे which will be very strong, and if we follow those, then we can achieve the best possible outcome. It's not something कि let's assume कि जो सारे opportunities 10,000 rupees per month आपको help कर रहे हैं, वही सेम आपको 1 crore बना के देंगे. Absolutely not. You have to redirect your action plan according to your vision and goals, and you have to have clarity कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अपनी लाइफ में इंकलकेट करनी है, जो मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकूं. इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप और एनी अदर एस्पेक्ट एज वेल. बट यू हैव टू रीडायरेक्ट योर, you can consider your action in terms of your goals as well. Next comes recharge. काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि while I am working on my vision, while I am working on my goals, dreams and ambitions, वो अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं, वो अपने पर्सनल सेल्फ को भूल जाते हैं. बट द फैक्ट इज माई फ्रेंड, this is the question which you have to ask to yourself. Even this is the concept which is very common nowadays. काफी सारे लोगों को burnout and depression phase काफी cool लगता है. I'm depressed, I'm having burnout phase and all, I'm on a break. But the fact is my friend, क्या आपको burnout phase को actually में experience करने की जरूरत है? क्या आपको depression actually में experience करने की जरूरत है in order to come out of that? The answer is absolutely no. क्योंकि as a human being we know that we are not artificial intelligence. We can't work 24 hours a day, we can't work for complete 12 hours and so on. In between we have to take a break. तो उसी के साथ what you can do, and even this is what all the high performers of this world do, is that जब भी वो अपना अगला साल प्लान करते हैं, which we also discussed in last one episode itself, कि जब भी वो लोग अपना next year प्लान करते हैं, first of all they fix their vacations, they fix their me time, कि क्या इस साल में मुझे कौन सी जगहों पे विजिट करने जाना है, कौन सी जगह यू कैन कंसिडर वेयर आई हैव टू गो इन ऑर्डर टू हैव अ मी टाइम एंड सो ऑन. Because those people know that काम कभी भी खत्म नहीं होने वाला है. Even though they have big missions, they have big visions, they have big, you can consider aspirations as well. But they know that if we want to continue this particular journey for rest of our life, then we don't need to go through that downfall of burnout and depression and then move forward. So the best practice which you can follow is to set a plan कि इस साल में मैं कितने बार वेकेशन पे जाऊंगा. एंड इट शुड नॉट बी द सिनेरियो कि हर हफ्ते आप वेकेशन पे जा रहे हो एंड सो ऑन. इट शुड नॉट बी दैट सिनेरियो. इट कुड बी once in 2 months, once in 3 months, ताकि आप अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेस फ्री कर सको, ताकि आप अपने ब्रेन को completely declutter कर सको, एंड यू कैन कम अप with new thoughts, and it can actually help you to build momentum for upcoming few months and few years and definitely few decades as well. So this is the fifth thing. Sixth point is to restructure our action plans, and in terms of our goals and vision, what we have to do is we have to restructure our action plan in such a way. जैसे कि मैंने बताया कि काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है जो आपको हेल्प कर सकती है इन ऑर्डर टू मेक 10,000 पर मंथ. काफी कम अपॉर्चुनिटीज हैं उन 10,000 में से जो आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ बनाने में हेल्प करेगी. उसमें से भी काफी कम है जो आपको 10 लाख रुपीज पर मंथ बनाने में हेल्प करेगी. एंड इवन देर आर वेरी फ्यू विच विल हेल्प यू टू मेक 1 crore, 10 crore, 100 crore एंड बियॉन्ड दैट. राइट, सो यू हैव टू स्ट्रक्चर योर एक्शन प्लान. एंड इट्स नॉट गोना बी लाइक कि अगर आप वही सेम चीज को वर्कआउट कर रहे हो, तो लाइक लेट्स अज्यूम दैट यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज, तो अगर आप उन्हीं सेम एक्टिविटीज को फॉलो करोगे तो यू आर गोना गेट द सेम रिजल्ट्स. बट इफ यू वांट टू अचीव नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स, then you need to do certain activities which are outperforming, which are completely new, and that's how you're actually going to achieve your goals, dreams and aspirations even in more faster way, and even in more concise, precise and most defined way. So this is the sixth thing. And even make sure आप अपना जो action plan है,
you are absolutely clear about it, because जब तक आप अपने action step पे clear नहीं हो, it's not gonna make sense. और उसी के साथ what lot of people think is कि अगर मेरा ये goal है, let's assume I want to make 15 crores in next 1 year, तो काफी सारे लोगों को लगता है कि यार मैं पहले 11 महीने चिल आउट करूंगा, अब आखिरी के एक महीने में मैं I'll work out and I'll make 15 crores. But the fact is, my friend, the action plan should not be in such a way कि मुझे सिर्फ एक महीने वर्कआउट करना है, पूरे 11 महीने में चिल आउट कर दूंगा. एब्सोल्युटली नॉट. द एक्शन प्लान शुड बी इन सच अ वे दैट यू आर डूइंग डे टू डे एक्टिविटीज. आप you are taking one step at a time, you are building that momentum, you are building that discipline, ताकि आप अपना जो goal है, even you can go beyond that. And honestly speaking, I have observed this particular, you can call it as feature as well, you can call it like their habit as well, that they focus more on building that particular discipline, and that is why they are the best performers in this world. Whether you take traders, whether you take any other high performers in this world as well, best of the best people in this world don't focus on just their goals. Although उनके goals set होते हैं, they want to achieve that, they have that particular vision, they have that particular mission, but वो अपने daily action steps पे focus करते हैं. They focus on developing themselves 1% improvement per day. It's not, जैसे कि मैंने मेंशन किया, इट्स नॉट द सिनेरियो कि आपको 11 महीने तक पूरा चिल आउट करना है, अगले एक महीने में यू हैव टू फिनिश ऑल योर गोल्स. इट शुड नॉट बी दैट सिनेरियो. You should completely surrender to the process, and you have to have that sustainable growth. You have to have that continuity with the help of discipline, and that's how you're gonna achieve those goals even more faster, or even beyond that as well. So that's what sixth step is all about. And seventh step is gonna be re-engage. Re-engage in the sense, lot of people think कि मैंने ये action plan set कर दिया, मैंने ये सब set कर दिया, but what lot of people miss out is this: they don't take action. उन्होंने एक्शन प्लान बना लिया है, बट दे डोंट से दैट गेट सेट एंड गो. वो उस चीज में मिस आउट कर देते हैं, दे लैक कॉन्फिडेंस एंड सो ऑन. बट द फैक्ट इज, माय फ्रेंड, अगर आप अपनी जर्नी में स्टार्ट कर रहे हो, डोंट बी शेमफुल, डोंट गेट एम्बेरेस्ड कि मुझे लेवल जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है. Everybody starts from level zero, and they start from level zero, and that is why they are at the next level, and they are your inspirations as well. Even there are a lot of people in this world whom I look up at in the form of inspiration, but honestly speaking, I also started from level zero. Similarly, you also have to start at some point of time from level zero to go to the level which you want to achieve into your life, which the goals or the aspirations which you have into your life, right? So I hope that you have got immense value and clarity from this particular video as well, from this particular episode of 2023 Finish Your Strong series. And thank you so much for watching this particular video till the end. And make sure you watch this particular video once again, ताकि आपको clarity मिल सके कि कौन सी ऐसी चीजें हैं on which you need to work out, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे आप already workout कर रहे थे, but you need to brush up through all those things, जो कि I've already mentioned into this particular video. And I'll see you in the next episode of this particular series. Till then, make sure you take full action, और उसी के साथ make sure you keep learning from our podcast as well, because in this current week on Wednesday we are having a very interesting podcast based on NLP. So make sure you enjoy that particular podcast as well. And looking forward to see you in upcoming videos. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.